Good morning everyone, good morning. This is Sahiti and today I'm here to present a stand-up comedy for you all. Stand-up comedy, yes, and I hope this stand-up comedy does not become a comedy on me because this is the first time I'm trying stand-up comedy. So I hope it goes well. So yeah, let's get started with our stand-up comedy. So one day I was passing through the staff room. I was walking in the corridor of my school and I was passing through the staff room where all the teachers in the staff room were discussing about their specializations. Like maths teacher was saying she did like PhD in maths, and biology teacher was saying she specialized in biology, social teacher was saying she did sociology. So each and every teacher were appreciating themselves by talking about their specializations. And suddenly my PT sir was coming through the staff room because that was our sports period. So that he can collect some sports equipments because that was a group B period. So now when he entered into the staff room, suddenly maths teacher got up from her seat and she asked Sudhakar sir, not Sudhakar sir, I'm sorry, I was taking up my PT sir's name. So suddenly asked the PT sir, we are all talking about our specializations and what is your specialization, what are you specialized in. Then my PT sir, without any speaking, he just showed this. So I hope you all understood what does it mean. And he also said that he could run 600 meters in 50 seconds. Now suddenly maths teacher got up and asked a question. Now you said you can run 600 meters in just 50 seconds. Now same with this in kilometer per hour. You said this in meter per second, or same with this in kilometer per hour. And then my PT sir said, "Oh ma'am, this is out of syllabus. This is not covered under my syllabus. My syllabus is just." This is only my syllabus, not meter per second, kilometer per hour. So that happened. And I always go through a confusion when my third period is physics and fourth period is Hindi. Now you may be, what? Third period is physics, fourth period is what I said? Hindi. How can it be so? What is the confusion? See, a few months back when I was studying in 9th grade, now I am in 10th grade, but when I was studying in 9th grade, physics sir was as usually teaching us gravitation chapter. He was discussing what does gravity mean. Obviously, what does gravity mean? Gravity is nothing but the force of attraction on all the objects towards the center of the earth. The force of attraction applied by the earth on all the objects present in it towards the center of the earth. Now, the next period was Hindi. In Hindi, at that time, ma'am was discussing about Ramayana because we were having a lesson regarding that. So when she was discussing about Ramayana, that day she was discussing about Hanuman. She said Hanuman is flying in the sky, Hanuman is flying in the sky. But according to physics, we studied that according to gravity, there is a force of attraction applied by earth on each and every object on it towards the center of the earth. But now what ma'am is saying, now suppose Hanuman is also a living being. Now if we jump, again we come and land on the earth. Why? Because our earth is applying gravity. And even Hanuman, how can he fly on the sky? He should also fall down. Earth is also applying force of attraction. But why is it not falling? Why is it not falling? That's the confusion. Does anybody know the answer? Then write it down in the comments. So this is the confusion which each, for me, mostly occurs. And if a person wants to change his gender, they need not go to the doctor. Sir, I'm a boy, please change my gender to a girl. Sir, I'm a girl, please change my gender to a boy. You need not visit the doctor. You can go and ask the people who are weak in Hindi, that is those whose language, mother tongue is not Hindi, you can go and ask them. They'll automatically change the gender. But how? Now let me take my example only. Even my Hindi is all good, but my mother tongue is not Hindi, my mother tongue is Telugu. But then also I speak Hindi, but mostly I get confused here. So that is the reason I am using this. Gender change. कैसे? बताओ कुछ थोड़ा एग्जाम्पल दे दो यार. देखो जेंडर चेंज कैसे करोगे? डॉक्टर के पास जानी है ना, पर अब डॉक्टर के पास मत जाओ डॉक्टर के पास. सिर्फ आप मेरे पास आइए,
अब तो मेरे पास आई, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, लगता को लगती कर लेते हैं, उड़ता को उड़ती कर देते हैं, लिखता तो लिखती कर देते हैं। थोड़े थोड़े बार कंफ्यूज होके लिख देती हूँ पेपर पे, सोना लिख रही है, मैं कैसे लिख रही हूँ, सोना लिख रहा है। कुछ बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप डॉक्टर के पास मत जाइए, हमारे पास आइए ना, फ्री ट्रीटमेंट। एक चीज, अभी मैं फिर से हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ। एक दिन मेरी हिंदी टीचर ने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव इज द भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आवर तेलंगाना। भूतपूर्व तो यार, मैं भूतपूर्व तो मेरी गांव है, भूतपूर्व मेरी गांव है, तो क्या सिर्फ मेरी गांव के लिए पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं ना, पूरी इंडिया के लिए थे प्राइम मिनिस्टर। पर मैम तो बोल रही है भूतपूर्व के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तेलंगाना, हमारे तेलंगाना स्टेट से भूतपूर्व के प्राइम मिनिस्टर से, भूतपूर्व के प्राइम मिनिस्टर, ये मुझे बहुत कंफ्यूज करती है। पर जब मैंने मैम को मेरी डाउट प्रकट की कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो पर भूतपूर्व तो मेरी गांव है ना, भूतपूर्व तो मेरी गांव है, तो क्या पीवी नरसिम्हा राव सिर्फ मेरी गांव के लिए प्राइम मिनिस्टर काम करता? अरे लड़की, तू हिंदी में बोला, अरे लड़की पागल है क्या तू? तो मैंने, क्या हुआ मैम जी, मैंने क्या गलत बता दी? भूतपूर्व को हिंदी में हम लोग बोलते हैं फॉर्मर। तो मैंने पहले सेंटेंस क्या बताई थी, पीवी नरसिम्हा राव जो है, पीवी नरसिम्हा राव इज द भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आवर तेलंगाना। इधर भूतपूर्व का अर्थ है फॉर्मर, फॉर्मर। तो क्या होती है, पीवी नरसिम्हा राव इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आवर तेलंगाना स्टेट। तो जब तक मुझे ये भूतपूर्व वर्ड की मीनिंग पता नहीं चली, तो मैं तब तक ये डाउट को ना दिमाग में रखी। नेक्स्ट दिन ही मैंने ये डाउट को प्रकट कर दी और मेरी मैम तो बेहोश हो गई इस डाउट को सुन के। So now when I talk about English, I feel there is a small relationship between the capital letters and small letters. मुझे लगता है कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं chill bro chill, बट स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वर्क ब्रो वर्क। पर हमारे फैमिली तो ऐसा नहीं होता। हमारे फैमिली में कंसिडर कर लो कि कैपिटल लेटर्स हमारे फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स हम होते हैं किड्स जो हर वक्त मस्ती मजा इच्छा प्रकट करते ही रहते और हमारे क्या करते हैं, काम करते रहते ताकि वो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। पर इंग्लिश लेटर में तो कन्वर्सेशन कैसी होती है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। नाउ आई मोस्टली फील दैट कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बीच में कन्वर्सेशन ऐसी होती है, कैपिटल लेटर्स टेल टू स्मॉल लेटर्स, अरे स्मॉल लेटर्स आप क्या कीजिए ना, सेंटेंस की शुरुआत मैं करूंगी, बाकी सब कुछ ना आप करें, बाकी का काम आप करें, पहला काम हम लोग कर लेंगे और हम लोग चिल करेंगे, बाकी का काम आप कर लो यार, आप संभाल लोगे, कोई काम आपके बस की बात है ये। तो इस तरह की रिलेशनशिप मुझे देखने को मिलती है। तो this was I hope you all enjoyed this. Okay then, bye bye, take care, bye bye.